Hey, what's up ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the Gear Tales. मैं हूँ दीपजीत और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में. So in this video I am going to answer few frequently asked questions about the Xpulse 200T BS4 model after riding this bike for 27,000 kilometers. Okay, so दोस्तों मैंने Instagram पे एक स्टोरी क्रिएट किया था जहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपका कोई सवाल है इस बाइक से रिलेटेड so you can ask and I will answer them in the next video. Also जो YouTube community section है, कम्युनिटी सेक्शन पे मैंने आप लोगों से एक पोस्ट डाला था तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे सवाल आए हैं. सो आगे बाइक को रोकते हैं एंड लेट्स आंसर द क्वेश्चंस. All right, so now let's take the questions. The first question is, bro, how is your overall experience so far with the bike? How far it matches with your expectations? So the experience so far with the bike has been a mix of good and bad, and I was expecting this bike to be reliable, to be refined, and I was also expecting that the spare parts will be easily available, and I was also hopeful of a very good after sales and service. But it has turned out to be the exact opposite. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था what are the basic problems of Hero MotoCorp. And जब मैं बाइक को राइड करता हूँ, when I ride the bike, when it performs well, I don't have any problem at that point of time. But जब ये सब problems आते हैं and ये सब problem solve नहीं होता है, the experience naturally turns out to be very bad. So yes, that is my experience, mix of good and bad. वैसे तो ये बाइक बहुत ही capable है, but the only drawback is the pathetic after sales. And पिछले वीडियो में मैंने जो सब चीज़ को पॉइंट आउट किया था, दैट डेफिनेटली रेजेस अ क्वेश्चन ऑन द बिल्ड क्वालिटी, ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन. ऑलराइट, सो आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेडलाइटर कोनो व्यवस्था আছে? सो क्वेश्चन का मतलब ये है, बेंगली में पूछा गया कि हेडलाइट का क्या कर सकते हैं. तो হেডলাইটের তো এখন কোনো ব্যবস্থা নেই. তুমি যদি রাত্রে রাইড করতে চাও তোমাকে एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट लगाते হবে, फॉग लैम्प लगाते হবে. तो इसका आंसर मैं यही दूंगा कि अगर आप नाइट राइड करना चाहते हो तो इसका जो स्टॉक हेडलैम्प है बहुत ही घटिया है, बेकार है, कुछ नहीं दिखता है. अगर आप नाइट राइडिंग करते हो तो यू शुड डेफिनेटली इंस्टॉल अ पेयर ऑफ फॉग लैम्प्स और ऑक्स लैम्प. ऑलराइट, next question, I too own the same Xpulse. Does this bike, okay, can this bike be ridden 700 plus kilometers in a day without rest? So this is a very interesting question. तो देखो दोस्तों, 700 plus kilometers in a day without rest. Okay, so this is a very big statement. Without rest, इसका टैंक रेंज 700 plus kilometers नहीं है. इसका जो इंजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट्स अ एयर कूल्ड इंजन. आई फील इस इंजन को आप एक बार में 150 किलोमीटर विदाउट रेस्ट चला, उसके बाद इट शुड बी गिवन रेस्ट. एंड 700 किलोमीटर्स इज वे टू लॉन्ग. एंड 700 किलोमीटर्स प्लस विदाउट एनी रेस्ट, सपोज बाई चांस अगर कोई भी बाइक चल गया, विल द राइडर हैव दैट काइंड ऑफ एंड्योरेंस टू राइड फॉर 700 plus kilometers in a stretch? I don't think so. So the straight answer is no, not at all. Next question, is it better for touring or not? Or let's say, is it good for touring or not? Yes, absolutely, it's a good bike for touring actually, but the limitation is that ये 80 से 90 के स्पीड में कंफर्टेबल क्रूज कर सकता है. जब एक सीधा हाईवे होगा ना दोस्तों, आपको लगेगा कि यू विल फील वेरी बोर्ड एक्चुअली, क्योंकि जब स्ट्रेट हाईवे होता है आपको चाहिए होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर पंच मिले, थोड़ा सा ज़्यादा अगर पावर रहता, अगर 6 गियर रहता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता. बट ओवरऑल इफ यू आर हैप्पी विथ 80 to 90 kmph, आई फील इट्स गुड फॉर टूरिंग. बट येस, बी अवेयर ऑफ द पैथेटिक आफ्टर सेल्स ऑफ हीरो मोटोकॉर्प. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई सीट हाइट कितनी है? और BS4 और BS6 की सीट हाइट में कोई फर्क तो नहीं है? नहीं भाई, सीट हाइट इसका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 800 mm है इसका सीट हाइट. एंड नो, एज फार एज आई नो, BS4 और BS6 के सीट हाइट में कोई फर्क नहीं है. ठीक है. So now let's take the next question. I need about Sari Guard footrest. Okay, so ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला तो दोस्त मुझे बाइक के साथ ही मिला था. Right from the first day it was installed with the bike. Okay, so basically you should contact your showroom in that case. You should contact your showroom. Okay, so उन लोगों से पूछो अगर उन लोगों को कुछ मालूम है. So I think they can help. So let's take the next question. Any engine noise complaints or hitting issue? Got the ABS one fixed? Still jams in some cases. Absolutely agree with you. Engine noise complaints I have, and in the previous वीडियो हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड. अभी भी मेरे बाइक में वो इंजन का नॉइज आता है. एंड हीटिंग इशू तो देखो एबनॉर्मल हीटिंग नहीं है, लेकिन हाँ, आफ्टर चेंजिंग दोज 3 कंपोनेंट्स, कैमशाफ्ट, रॉकर आर्म्स एंड टेंशनर, थोड़ा सा स्लाइटली कंपेरेटिवली हीटिंग बढ़ा है, लेकिन नथिंग एबनॉर्मल. हीटिंग इशू अब तक मैंने शायद फेस नहीं किया है. बट येस, द ABS, इवन आफ्टर चेंजिंग दैट ABS unit, it still gets jammed in this kind of off-road conditions and in speed breakers. So this is what it is. यही है.
So now let's take the questions from the YouTube community post. The first question from the YouTube community post is, please include easily available accessories for this model. Usually in the market, easy to get accessories like panniers, saddlebags, safety guards, etc. for 250cc plus bikes. So want to know for this bike too. So accessories के नाम पर तो मैंने एक नकल गार्ड लगाया है, एक विंड स्क्रीन लगाया है, एक फॉग लैम्प लगाया है, एंड जो लगेज सेटअप मैं फॉलो करता हूँ, जो लगेज सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, मैं उस पूरा लगेज सेटअप के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ. इफ़ यू वांट टू सी दैट दोस्तों, आई विल ड्रॉप द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. एंड जो नकल गार्ड है उसका भी परचेज लिंक मैं नीचे डाल दूंगा. एंड जो विंड स्क्रीन है दैट इज एक्सपोज 200 का विंड स्क्रीन, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो विंड स्क्रीन का भी मैं एक डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो दीज आर द एक्सेसरीज आई यूज. बेसिकली एक टॉप बॉक्स भी है, एंड व्हेन आई गो फॉर लॉन्ग राइड, सो बेसिकली आई हैव अ लगेज सेटअप, अ वेरी कन्वीनियंट लगेज सेटअप. सो उसका उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा. ऑलराइट, सो यू फील फ्री टू चेक दैट आउट. प्लीज़ शेयर द ABS परफॉर्मेंस ऑन फ्रंट ब्रेक स्पेशली ऑन रफ रोड्स. येस बड़ी रफ रोड, जैसे कि इस तरह के रोड में जब मैं आ रहा था, सो बहुत बार जैम हो गया था, एंड इट्स वेरी कॉमन. इवन आफ्टर चेंजिंग दैट ABS यूनिट इट स्टिल गेट्स जैम्ड. नथिंग टू डू. हाउ इज द परफॉर्मेंस विथ पिलियन इन हिल्स? आई एम प्लानिंग टू बाई द BS6 one. Is it struggle, okay, or does it struggle to climb uphill, or it has enough power for two? So एक बार मैं एक पिलियन को लेके गया था करशंग. सो वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया, करशंग का जो रोड है फ्रॉम वाया रोहिणी, that's quite steep. And जो इस गाड़ी का गियरिंग है, it always demands to be in the first gear when you are with the pillion. Even if you're alone, it will always demand to be in the first gear in the steep climbs. So जा सकते हो आप steep climbs में, लेकिन you have to always engage the first gear if it's very steep. ठीक है, क्योंकि इस गाड़ी का गियरिंग है ऐसा है. Now let's take the next question. Please include if there is any heating issue, mileage, performance, and share us if you're planning to modify your bike in the days to come. So heating issue तो नहीं है फिलहाल. वही just after changing those three components, I have experienced slight amount of heating, but nothing abnormal. Mileage is around 30 to 40 depending on your riding conditions. Performance, as I said, in the highway you can cruise comfortably at 80 to 90. That is the sweet spot. And if I am planning to modify this bike, no, I feel जो modifications है bike में, that is more than enough. All the functional modifications have been done to the bike, and I feel it's good to go. Okay, so now let's take the next question, which is, please include what height should be for riders, and is it a family bike? So मेरा height है 5.5 and I have no problem at all to manage this bike. I feel 5.4, 5.3 also can manage this bike easily. And family bike की बात की जाए तो when we talk about family bike, we see the sitting capacity. So इसमें दो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जो सीट का प्रोफाइल that's very narrow and small. So if both the rider and the pillion are healthy, so they might have some problem. But if you are not so healthy, you can manage very easily. But yes, the seat has not been designed for proper family use, that I can say. Okay, so now let's take the next question. Would like to know about the engine performance after riding all those kilometers. तो भाई मैं क्या बोलूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंजन तो मतलब बैंड बच चुका है. एंड एज आई सेड, दिस रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी, ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंजन. हीरो मोटोकॉर्प ने पता नहीं क्या किया है, इतना जल्दी ये सब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. एंड दिस हैज़ टर्न आउट टू बी वेरी कॉमन प्रॉब्लम. सो 20,000 kilometers तक I had rather good experience, but after all those incidents I don't think so my experience was good. So yes, I have covered multiple types of terrain on this bike, but engine performance after 20,000 kilometers was rather very bad. Okay bro, can you upload a video of headlight visibility? Is it adjustable? So yes, the headlight is adjustable. And okay, then done. Headlight visibility के ऊपर एक वीडियो आ जाएगा. Next video is going to be on the headlight visibility. So okay, so done then. And headlight तो वैसे बहुत महा फालतू है, but still I will upload a dedicated video to show how the headlight performs in the dark. Okay, so now let's take the next question. What's the cruising speed of your bike? So bike ka cruising speed is around 80 to 90, comfortably in that range, and the top speed is 115 kmph with a lot of vibrations. Okay, so now let's take the next question. What about the heating issue? I have Xpulse 280 BS6 model and it heats a lot. तो हीटिंग इशू तो फिलहाल मुझे नोटिस हो रहा है आफ्टर चेंजिंग दोज कंपोनेंट्स, बट वैसे कुछ एबनॉर्मल नहीं है. एंड दिस हैज टर्न आउट टू बी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन BS6 मॉडल्स. बहुत सारे ओनर्स BS6 मॉडल के कंप्लेन कर रहे हैं कि बाइक हीट हो रहा है इवन आफ्टर राइडिंग 2 किलोमीटर. सो आई फील अगेन दैट्स फ्लॉ फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प पुअर R&D. सो क्लियर है, इट्स वेरी एविडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Hi bro, how much mileage are you getting? Thinking of getting this bike as it's an all-rounder. Do you face any ABS gear indicator issue in your BS6 model? Any gear issues? Your answer is highly appreciated. Thank you so much. So first question is thinking of any ABS issue? Yes, in the and first of all, this is not a BS6 bike. I ride the BS4 bike. In the BS4 bike, the ABS problem is very prominent. Yes, I faced that. And gear position indicator, yes. Once the gear position indicator was not working properly, but then I got it fixed. Now it works flawlessly. And any gear issues, no, gear shift में मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ है, so it works fine. Okay, so now let's take the next question, which is which engine oil are you using in Xpulse 200T? I am also owner of the same bike and not happy with the company providing engine oil performance. Please answer. So buddy, I also use the same engine oil जो company provide करता है, and I feel जो वो oil है that is suitable for city use and short rides for 60 to 70 kilometers or so. But if someone is interested in long distance touring, he or she should go for a fully synthetic engine oil. Can you please tell me that can I cruise between 90 to 100 kmph on the highway in this bike? 100 is bit of kind of stressed for this bike. 90 तक it's okay with mild vibrations, with very little vibrations, but 100 तक जाने के बाद bike बहुत stressed feel हो जाएगा. Okay, so that is what I feel. So the next question is, this bike is good to buy or not? See, chassis on front where exhaust pipe coming out from engine. Hero made a cut over chassis. It could be dangerous. Yes, it could be dangerous, but I have used the bike on various terrains, but I never felt that it is weak. But हाँ, वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था. जो एग्जॉस्ट जहाँ से निकलता है वहाँ पे एक छोटा सा कट है, वो पाइप बेंड करके उस एग्जॉस्ट पाइप को फिट करने के लिए लगाया गया है. But that shouldn't have been. Yes, you are right, but that doesn't affect the durability of the bike. So far I have ridden, I didn't feel anything as such. Okay, so yes, that's a very good observation. Next question is, brother, I am facing a handle vibration problem in off-roads. Brother, actually I am not able to recognize what you actually mean. I am not able to get what you actually mean, but in the off-road I feel the handle will vibrate. After all, it's off-road. I would suggest you get it checked from a skilled mechanic. Okay, and if your service center technicians are skilled enough, you can consult them. That is what I feel. Okay, so the next question is, bro, I own BS6 model 200T. My bike overheats riding for just 2 kilometers. So sadly, दोस्त, based on my interaction with various Xpulse 200T owners, ये पता चला है कि इस बाइक में, I mean BS6 बाइक में overheating का problem आ रहा है. And as you said, just after riding 2 kilometers, it's very pathetic. So I don't know इसका solution क्या है दोस्त. I feel really sorry for you. I am so sorry that I don't know how to solve this problem. But I think you should talk with the technicians, service center guys once again, and they should have a proper solution to this problem. Alright, so the last question for today. I am also using the same bike and I feel like engine is not refined, having a lot of sound. Even Hero Service Center guys seem to have little knowledge about this bike due to not a common bike. If any other bike than street mechanics are enough to handle any glitch, don't know if only my bike has this problem or it's a common problem and average issue. So brother, in the previous video I had already addressed this issue, and जो problems का नाम आपने बताया, same problems I have also faced and I am still facing, and I also don't know कि ये कब तक चलेगा. I just pray कि हम सभी का बाइक जल्द से जल्द ठीक हो जाए, and I also pray कि मेरा जितने भी components चेंज होने वाला है उसके बाद से बाइक performs in a well behaved manner as it should, in a refined manner and in a reliable manner as it should. So with this I end the question answer session, the FAQ session. I hope this was helpful to you all. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, hit the like button, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है, feel free to dislike, and also feel free to use the comment box to express your views. I generally try to reply to all the comments as fast as possible, and I know the video was raw with very with a very beautiful background, so इसके लिए तो एक like बनता है. Anyways, with that said, this is your host Devji signing off from his beautiful location. Take care, bye bye, see you soon, and thank you so much for making me a part of your day.